So hello everyone, welcome back to Hollywood Regulatory Bodies. And as we all know, SEBI notification is out, and 13th April we can also expect notification. Now there were many students that as almost minimum 75 days to 70 days are available for us for the preparation of SEBI Grade A 2024. तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं. Some students have already taken various courses, but there are also some students who are doing self study, जो कि खुद से प्रिपेयर कर रहे. Now, as I already told you that we also have launched our SEBI Grade A 2024 complete course, which is live, not recorded, live. So if you want to join, you can definitely go on our Olive Board courses and you can check it out. I will also give the details in a very quick time. But before that, I will also tell you that today let me give to you a very important timetable as well as strategy for all the students who are preparing for SEBI Grade A 2024, and that is through self study. तो इसीलिए हमने बनाया है 75 days SEBI Grade A 2024 self study timetable. अगर आप ये टाइम टेबल फॉलो करते हो, विच इज फ्रॉम योर 15th मार्च 16th मार्च, ठीक है, अगर आप ये फॉलो करते हो, ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो दिन के आपको कोर सब्जेक्ट्स कवर करने के लिए, जो कि सेबी के 6 कोर सब्जेक्ट्स है. कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग, उसके बाद फाइनेंस, मैनेजमेंट, कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स. तो ये जो 6 सब्जेक्ट्स है, इफ यू गिव 4 to 6 आवर मिनिमम फॉर दिस 75 days, definitely all we can cover it very easily. Not only that, if I try to tell you, we will also in the timetable we have also given separate time for your QRE preparation, because many students feel कि QRE में वो weak है. although SEBI में QRE बहुत ही easy आता है, phase 1 is very easy, you should actually concentrate only on these 6 subjects, but QRE also you can practice for half an hour. Not only that, along with this we have also given static MCQs, जो YouTube पे हम सेशन लेने वाले हैं, वो भी हमने यहाँ पर टाइम टेबल में दिए हैं. एंड on day-to-day basis, whatever current affairs classes are there, which are taken by Lakshmi ma'am, then Pooja ma'am, as well as Divyanshu sir. So overall, this timetable is for all the students who are doing self-study. Even if you have taken a course, then also this timetable is useful for you, and even if you are doing self-study, then also it would be useful for you. Don't worry, do not get hurried और comment section fill मत कर देना कि सर इतना अच्छा टाइम टेबल अगर बन गया, प्लीज सेंड अस द टाइम टेबल, सेंड अस द लिंक, सेंड अस द टाइम टेबल, प्लीज वी वांट टू डाउनलोड द टाइम टेबल. डोंट वरी, द लिंक ऑफ दिस टाइम टेबल वुड बी गिवन in the description below. Not only that, the courses link also would be given in the description below. Let me now discuss to you the timetable. But before discussing the timetable, I will tell you one thing. Let us go to our courses. ठीक है, एक बार मैं सेबी ग्रेड ए 2024 जो कंप्लीट कोर्स है उसके बारे में थोड़े डिटेल्स दे देता हूं. एंड तक वीडियो देखना. आई एम ऑल्सो गोइंग टू टोटली डिस्कस व्हाट थिंग्स वी हैव कवर्ड इन दिस 75 डे टाइम टेबल, इसीलिए एंड तक रहना. अब बात करते हैं आर कोर्सेस. गो टू यूट्यूब, गो टू गूगल, सीधा ऑलिव बोर्ड के हमारे प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो. एंड वन मोर गुड अपॉर्चुनिटी इज दैट रमादान का ऑफर चल रहा है. डू नॉट लीव इट. अगर मैं होता तो मैं डेफिनेटली आई वुड हैव गॉन फॉर दैट ऑफर. इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी. यू कुड सी हमने सेबी ग्रेड ए 2024 कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है. फेज 1 फेज 2 लाइव है ये, और ये 23 मार्च से स्टार्ट हो रहा है. सो यू आर हैविंग बहुत ही टाइम है आपके पास. यू आर हैविंग सो मच ऑफ डेज फॉर योर प्रिपरेशन एज वेल एज फॉर चूजिंग द कोर्स. तो आप यहां पर कोर्स में अगर क्लिक करोगे, 23 को ये हमारा कोर्स स्टार्ट होने वाला है. Why 23 we have kept? So that more and more students, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं, should I give SEBI or not? I have not started my SEBI preparation. So for all your doubts, for all your counseling, we have given the start date of 23 March. Now, when we talk about the overall course, 80 plus live classes related to commerce and accountancy, management, finance, costing, companies act, economics. फेज 1 एंड फेज 2 कवरेज ऑल्सो. फेज 1 में ये 6 सब्जेक्ट्स थोड़े से इजी आते हैं एमसीक्यूज, बट एट द सेम टाइम अगेन फेज 2 बिकम्स डिफिकल्ट. नॉट ओनली दैट, वी ऑल नो वी आर एक्सपेक्टिंग डेट्स फॉर फेज 1 एंड फेज 2 एग्जाम, एंड वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि सिलेबस चेंज हो सकता है, बट आर कोर्सेस आर लाइव. सो इफ एनी चेंज इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सेबी, हम वो रिफ्लेक्ट करेंगे हमारे सारे कोर्सेस में. 100 प्लस लाइव सेशंस में वीडियो सेशंस फॉर फेज 1 एंड फेज 2 अगेन, एंड दिस इंक्लूड्स योर
QRE also, as well as even the descriptive English part also. So you will be provided live classes also, you will be provided recorded classes also. For recorded classes, for all the students जो कि working होते हैं, working professionals are there, they don't get enough time that they will be going through all the live classes, but you will have those recorded sessions also. Special English answer writing sessions, उसके बाद for all the 6 subjects you will get 80 plus detailed notes. Okay, this is what you are going to get. Topic wise test also you are going to get for each of these 6 subjects from phase 1 point of view as well as phase 2 point of view, and descriptive tests also you are going to get for the English subject. I hope that this overall course I have discussed enough, and if you have not thought about SEBI grade A exam, or maybe if you have not joined a course yet, I guarantee you this is a one of a kind course. बाकी के प्लेटफॉर्म्स पे क्रैश कोर्स हो रहा है. इफ यू हैव नॉट कवर्ड द सिलेबस in an very comprehensive way, and if you just sit for a crash course, it would be very difficult for your understanding. This is not a crash course, this is a complete course. Crash course हम बाद में लाने वाले हैं. This is a complete course and it would be really very rigorous. Now why I am telling rigorous, I will show you. ये जो timetable है, whatever topics are there, these topics we have kept according to our courses only. So whatever our course is there, SEBI grade A 2024 complete course for phase 1 and phase 2, it is a comprehensive course और बहुत ही rigorous timetable है उसका. Okay, daily 3-3-2-2 classes will be there, and it would be our responsibility कि before phase 1 we will also give you 10-day buffer timing before that, so that आप mock test दे सको, but before 10 days only we will complete the syllabus. This is our guarantee. Now let us look at this timetable which I have given. So overall अगर हम timetable को देखें तो first part is your date, the second part here you could see the topics to cover, minimum 4 to 6 hours. अब दिन में आपको 2 सब्जेक्ट्स करने पड़ेंगे. सेबी में 6 सब्जेक्ट्स है, तो अगर हम कंसीडर करें कि मिनिमम 70 to 75 डेज है हमारे पास. अगेन रिमेंबर देयर आर ऑल्सो सम स्टूडेंट्स हु विल फील कि होली आ रही है तो 4-5 दिन उधर चले जाएंगे. प्लीज डोंट डू दैट. सेबी के नोटिस आ चुके हैं. बी लिटिल बिट ऑनेस्ट, बी लिटिल बिट डिलीजेंट, ठीक है, एंड बी लिटिल बिट डिटरमाइंड टू क्लियर द एग्जाम. 4 दिन होली के सेलिब्रेट करके क्या होगा? दैट्स व्हाट आई डोंट गेट एनी पॉइंट इन दैट. दैट इज व्हाई गिव दैट टाइम फॉर योर ardent preparation. नाउ from 15th we have kept 75 days continuously. Why continuously? Because the more important here is to complete the syllabus and practice more. For SEBI, completing the syllabus is vast 6 subjects. It is also important that for all these 6 subjects and for the whole syllabus, you again give mock tests also, you revise well also, and you practice also. That is very important. I have seen that most of the students for SEBI, they prepare well but they don't practice, and this is how you get eliminated. So अगर हम देखें 15-16 जो कि आज कल की तारीख है, अगर आप उससे प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, ये देखिए वी हैव स्टार्टेड विद द सब्जेक्ट्स ऑफ, पहले तो हम शुरू कर रहे हैं कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी विच इज पेड विथ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट एक सिंपल सब्जेक्ट है, स्टैटिक थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड. दैट इज व्हाई अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट लाइक कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी हैज बीन पेड विथ मैनेजमेंट. I will recommend पहले कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी एंड मैनेजमेंट को पेयर लीजिए. अलॉन्ग विद दैट यू स्टार्ट क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, whatever you are comfortable with. I have kept quant here, so quant से आप start कर सकते हो. Now on our Olive Board regulatory YouTube channel you will see that we are going to bring from Monday the commerce and accountancy MCQs by Ajay sir for 3 days. Then next 3 days in a week we are going to bring costing MCQs which are by Ajay sir, finance MCQs by Divyanshu sir, management MCQs by Divyanshu sir, and economics MCQs by Lakshmi ma'am. So we are bringing the static related, we will bring a series 15 MCQs or 30 MCQs, we'll bring a series so that आप भी according to these topics you will be able to revise. And not only that, daily जो हमारे current affairs के sessions है वो तो होके रहेंगे, we will never miss that. PIB and government schemes जो भी daily session होता है लक्ष्मी मैम लेती है. ओके, GA बाय पूजा मैम 7 AM मॉर्निंग में वो भी होता रहेगा, एंड दिव्यांशु सर का करंट अफेयर्स वो भी होता रहेगा. करंट दी फाइनेंस करंट अफेयर्स एंड PIB आर इन इवनिंग, वेयर एज GA इज इन मॉर्निंग. ये क्लासेस तो कंटिन्यूअसली आपको डेली बेसिस पे करने ही है. यू हैव टू डू दिस ऑन डेली बेसिस. सो हियर यू कुड सी फ्रॉम 15 March if you begin, we have given different topics. Now look at the topics very carefully.
आप देख सकते हो recording transactions has been covered in 4 parts. Then you could see that introduction to accounting standards, accounting for depreciation, accounting for inventories, revenue recognition, such type of topics. See, important one of the topics I'll like to point out here, cash flow statements. इसको cover किया है हमने 3 parts में. तो 3 दिन आप बस कैश फ्लो स्टेटमेंट कर रहे हो और लीडरशिप भी आप 2 दिन कर रहे हो और उसके साथ इमोशनल इंटेलिजेंस कर रहे हो. सो वॉट एवर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर देयर, हमने ऐसे नहीं किया है कि ये आधे घंटे में करो, 2 घंटे में करो. नो, वी हैव गिवन अ गुड टाइम टू प्रिपेयर. वी ऑल नो दैट कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए. तो एक दिन में उसका प्रिपरेशन नहीं किया जा सकता. इट इज वन ऑफ द फुलिश थिंग टू से टू योरसेल्फ दैट जस्ट मेक अ टाइम टेबल बेस्ड ऑन डे टू डे बेसिस एंड डू कैश फ्लो स्टेटमेंट इन 1 day, रेशियो एनालिसिस इन 1 day. It is not a requirement. You can go slowly. The real thing is that conceptual clarity, coverage of the syllabus, practicing MCQs, and then solving the questions and looking at how much good we are at a particular topic in a particular subject. Commerce and accountancy and management, when you will be doing, after that we are starting your next subjects, which is finance and costing. So finance and costing can be paired together, and after commerce and accountancy you can start with फाइनेंस टॉपिक्स एंड कॉस्टिंग टॉपिक्स. तो यहां पर हमने टाइम टेबल में अप्रैल में जो स्टार्ट हो जाएगा फाइनेंस के टॉपिक्स एंड कॉस्टिंग के. तो यहां पर देखो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग के लिए कितने दिन दिए हैं, ऑलमोस्ट 5 to 6 days आर गिवन बिकॉज इंपॉर्टेंट टॉपिक है. देन हियर ऑल्सो यू कुड सी फाइनेंशियल मार्केट्स ऑल्सो हैज बीन गिवन 2 to 3 days. सो इन दिस वे यू अंडरस्टैंड दैट वी हैव चूज्ड अ टॉपिक. We chose a topic related to finance, commerce and accountancy, management, costing. We saw that topic that okay, this topic is very important for SEBI and it will require more than almost 4-5 hours or maybe 2 to 3 days. And based on that, this timetable has been done. I also told you this timetable consists of whole of your syllabus coverage. The core subjects in your 4 to 5 hours, then your QRE section, then your practice MCQ section, and then your daily current affairs. So in this way, we promise after completing your finance and costing, you can directly jump to your economics part. Only few topics are there in economics of SEBI. थोड़े से macro topics and some topics are micro topics. Those have been covered here: demand and supply for money, then multiplier and accelerator, investment function, production curve, etc. All these topics have been covered in this timetable. And then current affairs revision also we have given. Not only that, after every 7 days, topic wise test and sectional test, here I have given a tab which you can do on Sundays. Now you will say that ki sir ye kahan se kare, where to do? So don't worry, we at Olive Board are there. If you take our courses, you will get one of the best India's fine tests, topic wise test, sectional test, as well as complete mock test. We are known for our quality of notes also and mock also, and courses also. I would rest assure you that we would be responsible for not just covering your syllabus but giving you such a conceptual clarity that you will ace in the exam. This is what we provide. So all this timetable, if you want to download, you can definitely go in the description box of this video and you can download this timetable. And yes, this course is now live. You can go and you can just enroll here. You can enroll here. ऑलरेडी सेबी का ये कोर्स आप जाके एनरोल कर सकते हो. एंड डोंट वरी, यहां पर आप कूपन भी यूज कर सकते हो. इसीलिए मैंने कहा था ऑलरेडी द ऑफर इज गोइंग ऑन राइट नाउ. इट वुड बी टू लेट इफ यू मिस दिस चांस. सो दैट्स इट अबाउट दिस सेशन. आई होप दैट इन दिस ओवरऑल टाइम टेबल 75 days, this, even if you have taken a course or maybe even if you are doing a self study, I think this would be really fruitful for you to go through all this topic and cover the syllabus bit by bit. Also one more thing, you all will feel that sir, have you not given any days free? This I have not done because many of the students, almost 80% of the students who are preparing for SEBI grade A exam didn't in fact know कि exam आने वाला है कि नहीं. So now you know. So therefore don't waste your time on leisure activities. This timetable is really very helpful and can actually give you an edge over the rest of the competition. So go in the description box, download this timetable. And not only that, if you really want to be an SEBI grade A officer, definitely you should one time check out the course. And if you have any doubts, contact our counselors. They will definitely help you. Thank you very much and see you next time.